Hello everyone, I hope everyone is fine. This side Cadet Devansh Tiwari. Yes, you heard right. Cadet Devansh Tiwari. So finally after great struggle, I got rank with my name. My dream comes true. Selected in Merchant Navy and I got sponsorship from two shipping companies, that is Executive Ship Management and Volume Ship Management. So this video is especially for those who says that my PSUM is between 60 to 65. Can I get the sponsorship in Merchant Navy? So answer is yes. My PSUM was also 61 and you can see the result, sponsored by two shipping companies. So why not you? So for that you must have the proper guidance about interview, exam, what types of question asked in interview, how to tackle that and how to prepare for that. And I will also sharing my experience how I turned from a normal boy to a cadet. So watch this video till the end. So getting in the part of Merchant Navy was quite tough for me. I faced many challenges, many problems, many hurdles in my entire journey. It was irregular traveling, sleepless night and much more. And finally I selected the Merchant Navy and my dream comes true and it's worth it at the end. It is only and only possible because of IMUmate. And for my selection, all credit goes to IMUmate and all the mentors. Thank you so much for that. And right now, I can proudly say that yes, I am a sponsored cadet in Merchant Navy. There is only one person who truly understands the struggle and sacrifice I have made throughout my journey. That is none other than Shoaib. He and his team has been constantly supporting me and understanding my problem, that where I am facing it, and they solved it to getting into sponsorship. Because I'm a low PSUM, I was eligible only for 2-3 companies, but I never lost hope. I completely faith in myself, IMUmate, Shoaib and all the mentors. मेरे को अपने पर विश्वास था कि हाँ, I have 2-3 options and definitely I will give my 100% to these 2-3 options and I am succeeded. And yes, I did the same. पूरा अपना 100% दिया. All I prepared for the exam, interview, क्या type के question पूछते हैं, which was guided by all the mentors, and I give my best. And yes, finally I succeeded. I'm a proud sponsored cadet, ready to rock in the maritime sector. So never lost hope. Believe in yourself. You can do it. अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, so इतना better दो, इतना best दो उस चीज में कि definitely interview बोले कि yes, you deserve this position. Let's start my journey from starting. When I turned my passion of joining Merchant Navy into profession, and how I joined IMUmate, when I joined IMUmate, all those things. So let's begin. I passed class 12th in the year 2021. Normalization method was there, COVID batch was there. So I was not having much information on Merchant Navy at the time, but I was knowing only cruise ships. So that I searched in the YouTube and Google. So by searching, I get to know about Merchant Navy. That क्या Merchant Navy क्या होता है? After that, I get to know that many types of ships are there: gas carrier, LNG, LPG, containers, bulk carrier, all those things. So that inspired me the most to join this profession. हाँ, उसके बाद I search in YouTube and I search in Google also how to join the profession, what are the courses, what are the degrees, what are the colleges are there. I was keep searching. ऐसा करते करते late हो गया, and I didn't fill the form of IMUCET. आफ्टर कुछ टाइम बाद मेरे को पता चला कि IMUCET में अप्लाई करना पड़ता है, स्पॉन्सरशिप कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है. स्पॉन्सरशिप का पैटर्न मेरे को समझ नहीं आता, व्हाट एग्जैक्टली स्पॉन्सरशिप इट इज, मींस क्या है. आई वाज थॉट लाइक इट इज जस्ट अ स्कॉलरशिप, जस्ट लाइक वी गेट इन कॉलेज. सो आई वाज नॉट इन द परफेक्ट प्रोसेस. बट फिर मैंने IMUCET 2021 में अप्लाई नहीं किया था. So that was I was not eligible for the August 2021 and Feb 2022. So एक साल मेरा ऐसे ही चले गया. और मेरे को लगा कि हाँ भाई, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉलेज इंटरव्यू, तो मतलब हो जाता है, फॉर्मेलिटी करते हैं. तो फिर इन 2022 आई अप्लाइड इन ग्रेट ईस्टर्न समुद्रा, और उसके बाद फिर SCI में भी अप्लाई किया था मैंने. एंड आई ऑल्सो अप्लाई फॉर द IMUCET, और एट द टाइम माई IMUCET रैंक इट वॉज समवेयर अराउंड 7K. आफ्टर दैट व्हेन द टाइम कम फॉर द इंटरव्यू, मीन्स आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड. मीन्स आई वॉज नॉट एबल कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ दैम. Means when I was saying introduction, I was fluctuating. I was not able to tell the whole answer, and they were asking some technical question. I was not able to answer them. Because of this answer, I got rejected, and I didn't clear the interview. मेरे को लगा, but after that I thought that yes, it's not like a normal interview which you are thinking. You have to prepare very well for it. मुझे बहुत बुरा लगा. I feel very bad that I have wasted 1 year and I was not, because I was not having perfect information. इसलिए मेरा वेस्ट हो गया, वरना क्लियर है.
तो वही हुआ। फिर उसके बाद आई गेट टू नो अबाउट IMUmate। जून के लास्ट में पता चला। फिर एट द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आई ज्वाइन IMUmate एंड शोएब से बात हुआ। ही वॉज कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग मी एंड टेलिंग मी दैट हाउ टू प्रिपेयर एंड वो डांटे भी मेरे को कि तुम ड्रॉप लिए हो ऑलरेडी और अभी तक यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, व्हाट यू आर डूइंग इन द लास्ट ईयर। मैं सब भैया को समझाया, भैया दिस सिनेरियो हैपेंड विद मी, सो भैया गाइडेड मी वेरी वेल एंड दे गिविंग मी सम नोट्स एंड द इंफॉर्मेशन एंड फिर 10-15 दिन का कुछ क्लास चला था स्टार्टिंग में। एंड द फर्स्ट मॉक इंटरव्यू आई गिवन टू Aman भैया। After that constantly mock interview was going on and I was constantly improving it. शोएब बोले yes you are improving it। उसके बाद था 19th of July को आया मेरा SCI इंटरव्यू। When मैम ने बोला कि you are very good candidate and we want this type candidate because of your category we are not able to take you because the seat of general is already filled। मैं बोला कि सर अगर ऐसी बात है तो मतलब why you are shifting me in the next batch and why you are saying me to come in the fair batch। If you believe that I am the best candidate, then you should select me at this time also. Why you are shifting in that batch? तो बोले no because of your category हम लोग select नहीं कर पा रहे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। अगस्त बैच completed, SCI का इंटरव्यू हो गया। Then after that I called to शोएब भैया that भैया ऐसा हुआ SCI इंटरव्यू में ऐसा कैटेगरी हुआ। तो शोएब भैया tell me that okay don't worry about it, you have rank, you can apply in the fact batch। मैं बहुत रिस्क था, मैं सोचा कि चलो एमएट यूनिवर्सिटी चले जाता हूँ विदाउट स्पॉन्सरशिप। तो भैया मेरे को बोले नो डोंट गो फॉर द एमएट यूनिवर्सिटी विदाउट स्पॉन्सरशिप एंड योर PCM इज ऑल्सो लो एंड यू ऑलरेडी ड्रॉप, सो बेटर टेक अ रिस्क एंड प्रिपेयर वेल फॉर द स्पॉन्सरशिप फॉर द फैक्ट बैच। तो मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। भैया के जो बता रहे थे वो मैं कर रहा था एंड वाज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग एंड आई गिविंग मॉक इंटरव्यू टू ऑल द मेंटर्स, मुकुंद भैया, आकाश भैया, तेजस्वी भैया, प्रेरणा दी एंड ऑल द मेंटर्स आर वेरी हेल्पफुल। तेजस्वी भैया एंड अंकित भैया एंड अभिराज भैया, ऑल द मेंटर्स बहुत अच्छे थे, मुझे गाइड किए कैसे क्या करना है उसके लिए। ऑल फिर आए मतलब जितने टेक्निकल ऑल द टेक्निकल पर्सनल साइकोलॉजिकल जितने टाइप के क्वेश्चन भैया ने प्रोवाइडेड किए थे which were provided in the group, I prepared all the question। It comes to the time of fab batch का वक्त आ गया था। I have done with my SEMS exam and I done with the Great Eastern exam, and talking about the Great Eastern exam is very tough. Sometimes the answer you won't get in the Google also, so for that you need some tips and tricks। After joining IMUCET you will know it। So then with the exam हो गया, now turn आया interview का। My interview was on 24th of November, so I went to Lonavala Great Eastern campus और इंटरव्यू हुआ एंड आफ्टर दैट आई क्लियर इंटरव्यू। शाम को मिला दैट आई क्लियर इंटरव्यू एंड नेक्स्ट डे वेंट फॉर द मेडिकल एंड शोएब को बताया, बोले बहुत खुश हुई दैट हाँ तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया एंड फाइनली वेट फॉर द मेरिट लिस्ट। तो ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया, मेडिकल हो गया। देन कम्स अंडर द टर्न ऑफ सिम्स इंटरव्यू। माई सिम्स इंटरव्यू वॉज ऑन 10th of December, okay, and it was online interview and I answered all the questions for that and I definitely means I answered all the questions. After that, after completing my interview on 10th of December, on 12th of December I got a call from Samudra that send me your document। मीन्स मैंने फिर शोएब को बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था। फिर शोएब बोला, फिर देन शोएब ने बोला हाँ तुम्हारा सिलेक्टेड पक्का है। तो फिर ऐसा हुआ। मैंने बोला कि हाँ भाई 2 कंपनी मेरे पास है एंड आई विल डेफिनेटली गेट इन द मर्चेंट नेवी इन दिस फैब बैच श्योरली। बट हुआ क्या, फैब में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से उनसे कुछ कॉल ना मेल कुछ नहीं आ रहा। देन आई कॉल देम दैट सर क्या अपडेट है, कैसा क्या है। फिर सर ने बोला योर नेम इज इन वेटिंग लिस्ट, योर नेम इज इन वेटिंग लिस्ट एंड इट विल क्लियर, इफ इट इज क्लियर देन वी विल इन्फॉर्म यू। ऐसा भैया को बताया। भैया बोले कि ओके कीप अपडेटिंग मी। फिर ग्रेट ईस्टर्न की मेरिट लिस्ट की बारी आई। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। आई फील लिटिल बिट अपसेट दैट इंटरव्यू हो गया, मेडिकल हो गया, उसके बाद में मेरिट में नाम नहीं आ रहा है, तो बहुत मतलब लिटिल बिट अपसेट फॉर दैट। सो भैया को बताया, भैया बोले कि अब यू ओनली हैव वन ऑप्शन दैट प्रिपेयर फॉर द अगस्त बैच, फॉर दिस अगस्त 2023 बैच। एंड बीइंग आई वाज अपॉइंटेड एज अ लीडर टू लीड वन ऑफ द टीम ऑफ IMUmate and we were constantly supporting every candidates and everything. So I had time अगस्त बैच का, तो अगस्त बैच में I started preparing। मेरा सिम्स का एग्ज़ाम हो गया, ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, दैन फाइनली मतलब कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, दोनों साइड से नहीं आ रहा था कंफर्मेशन। उसके बाद फिर कम्स अंडर द IMUCET।
मेन ट्रेजेडी हुआ मेरा IMUCET में. I got 12,000 rank in my IMUCET, somewhere 12K. Last time was rank was 7K and I was expecting this time 3,000 to 4,000 rank, but हुआ नहीं. हुआ कुछ ऐसा कि मैं IMUCET एग्जाम में दिया, मैं 2 घंटे के आसपास एग्जाम दे रहा था, इंस्टेंटली माई सिस्टम स्टॉप बटन, पता नहीं क्या हो गया. फिर मैं इन्विजिलेटर को बोला सर दिस हैपनिंग. सो उन्होंने बोला कि ओके वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सिस्टम. सो आई वेंट टू डिफरेंट सिस्टम एंड व्हेन आई लॉग इन, ओ माय गॉड, मीन्स पूरा कम्प्लीटली ब्लैंक था. जितने मैंने आंसर टिक किए थे सब कम्प्लीटली ब्लैंक. मैं बोला व्हाट दिस हैपनिंग. तो बोले बोले कोई नहीं टिक करो. सो बिकॉज ऑफ दैट टाइम प्रेशराइज मीन्स टाइम 1 घंटा बचा था, तो मतलब आई वाज नॉट मेकिंग, सो मेरे से गलती हो गई कुछ आंसर, इसलिए गलत टिक हो गया. दैट्स व्हाई माय रैंक इंक्रीज एंड गोज टू समवेयर अराउंड 12K. IMUCET रिजल्ट के बाद भैया बहुत डांटे कि तुम घूमो फिरो, एंजॉय करो, 1 साल और एंजॉय करो, ट्रैकिंग पे जाओ, कैंपिंग पे जाओ. तो बहुत अपसेट लगा कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी. सो हुआ 22nd of June को आई रिसीव अ फाइनल कंफर्मेशन फ्रॉम सिम्स दैट यस यू क्लियर इंटरव्यू. शाम का टाइम था, आई कॉल टू शोएब दैट शोएब आई क्लियर द इंटरव्यू एंड ही वाज लिटरली वेरी हैप्पी एंड वी बोथ गॉट इमोशनल. मतलब मैं एकदम इमोशनल में रोने पे आ गया था. एंड भैया वाज आल्सो इन शिप एंड मतलब क्या बताऊँ उस टाइम पर सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा खुशी था. एंड मम्मी को बताया, फिर घर वालों को बताया, मतलब बहुत अच्छा इमोशन. आई फील लिटरली हैप्पी फॉर दैट आई गॉट यस फाइनली आई क्लियर द इंटरव्यू. ऐसा हुआ. तो उसके बाद ऑन 29th of June आई वॉज हैविंग अ वॉलम इंटरव्यू एट मुंबई. फिर वॉलम का इंटरव्यू दिया. फिर उसके बाद ऑन 1st of July I got a mail from Wallam that you also cleared the Wallam interview. So और खुशी की बात थी. At the time I was struggling to get a single sponsorship. Now I'm leading with 2 sponsorship. तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस सुन के कि यार मतलब एक टाइम था यार जब मैं एक स्पॉन्सरशिप की तरस रहा था. I was also having the less option company. तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी था. एंड उसके पहले मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई. ऑल द फ्रेंड्स एंड ऑल द मेंटर्स आर कांग्रेचुलेटिंग मी दैट यस यू क्लियर्ड द इंटरव्यू. सो ऐसा हुआ जर्नी. सो जर्नी वॉज फुल ऑफ हर्डल्स, ट्रैवलिंग प्रॉब्लम. मतलब ऐसा सिचुएशन लग रहा था कि मतलब आई डोंट डिजर्व. मतलब इतना काबिल होने के बाद भी, इतना डिजर्व होने के बाद भी यू आर नॉट गेटिंग अ सिंगल मेल फ्रॉम द कंपनी. व्हाट द थिंग इट इज हैपनिंग. सो ये बात है, कंप्लीटली फेथ इन योरसेल्फ, कंप्लीटली बिलीव इन योरसेल्फ. अपने मेंटर पे विश्वास करो, टेक अ प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम देम एंड डेफिनेटली यू विल क्लियर द इंटरव्यू लाइक आल्सो. So this was how the journey from a normal boy to a cadet, and I'm literally happy and I hope you will also clear the sponsorship interview in the future as well. So if you want to prepare for sponsorship and interview, you can join IMUmate. I'll recommend you. और ऐसा नहीं है भाई कि मैंने जो गलती की थी taking the things lightly, तुम वो गलती मत करो. If you are thinking that मेरे में अंदर कमी है, I was not having a perfect knowledge how to prepare for exam and interview, so you can directly contact to IMUmate and they will guide you in a better way. Just like I also do. मुझे बहुत guidance मिली, इसकी वजह से right now I'm a sponsored cadet. So if you want to become a sponsored cadet, you can join the batches.